Hello, hello, everything. Welcome. Um, wondering that let's start consumer protection. So first of all, if we see the syllabus of course, here's the syllabus. So there's consumer protection. I think voice is going too much. Wait. Okay. So consumer protection principle and importance, understand consumer protection, describe the importance of consumer protection, discuss the scope of Consumer Protection Act 2019, understand the concept of the consumer according to Consumer Protection Act, explain the consumer rights, responsibilities, understand who can complain the against whom, legal redressal, the remedies available, the role of NGO protecting yeah, government and protecting interests. So this was about the syllabus. Now let's go to the chapter itself. Um, yeah, okay, so this is highlighter. By the way, in the NCRT, I downloaded this book from on the website of NCRT. There's no chapter of financial markets for some reason. I don't know why. They should be have been, I think. But that is okay. I don't care. Why do I care? Right? Consumer protection. Okay, this obviously we work with. Each one of us is a consumer in one way or another. It's important for us to be aware and informed consumer of different services available to us in the market. About cases, just for example, okay, we don't have the case right now, and many problems that consumer facing for the purchase, use, and consumption of goods and services. But very few consumers are aware of the rights given to them by the Consumer Protection in 2019. Yeah, the Consumer Protection Act 2019 and replaced the Act 1986 seeks to widen hope and concerns. Um, and this was important. Have you ever thought what would be the plight of consumers if adequate protection is not provided to them? With growing competition and an attempt to increase their sales and market share, manufacturers, sellers, and service providers may be tempted to engage in unscrupulous basically are other direction where it means which is you know unconscionable in some sense. Okay, this is harder word I think. uh, I mean जो कि basically अच्छी नहीं होती है बहुत बुरा काम करते हो बिना वो सोचे समझे something like that. Okay, exploitative and unfair trade practices with defective, false and misleading advertising, hoarding and black marketing, etc. Be exposed to risks due to unsafe products might suffer from bad health due to adulterated products. I'm not explaining this because this is an introduction and it does not need much of explanation. Might be cheated because of misleading advertisement. Also, I should tell that this is going to be in English only, so that I'm also able to like speak English properly. It will be a practice for me also. Right? So if you're comfortable in Hindi, I think you should go away. Might have to pay. I mean, you should also come out of your comfort zone and try to understand this. Might have to pay a higher price than sellers engaging overpricing, hoarding, or black marketing, etc. As a result, consumer become unsafe, feels cheated, and is exposed to many risks and health problems. When business about to ignore the interest of consumer, the market forces have changed from a seller market, the earlier approach of uh, yeah, this is important to let's imply that the seller's failure, consumer is said to be the king in the free market economy. Okay, this is very important. Highlights uh, blue. Okay, what is happening? Hence, the Consumer Protection Act protection has significance for both the consumers and business alike.
like means don't be teachers importance, which I don't think is true. But book में लिखा है तो मानना पड़ेगा. Significant for both consumers and business alike. Under the Consumer Protection Act 2019, the Government of India has come forward the legal protection of safeguard interests of the consumer. Importance of consumer protection. The concept of consumer protection is to safeguard the interests of the consumer is important. It adopts measures to protect consumers from unethical practices by using this system. Provide a swift redressal of the grievances with the party. Okay, there are a few big points, but I don't think this is very so I will not highlight it. Sale of adulterated goods such as adding materials and substances to the product. So, sale of counterfeit goods such as selling a product that's a value in the real product. Sale of substandard goods such as the sale of products that do not meet the prescribed quality standards. Sale of duplicate goods, of course, the duplicacy, the first duplicate and the second duplicate of big Suze brands. Use of malfunctioning weights and measures that lead to underweight products. Black marketing and hoarding that eventually leads to scarcity of the product and as a rise in the price of the same. Overcharging a product that is charging a product above its MRP, the supplying of defective goods, advertising the advertisements that are misleading advertisements that falsely claim product or safe or a service to be shown as superior quality or standard when not in real. Supply of inferior services that is quality of services lesser than the condition agreed. Need for consumer protection. The need for consumer protection arises from the need to protect consumers from the loss or injury or other malpractices and to ensure physical safety of consumer, access to information, corporate social responsibility, CSR, to provide quality and quantity of goods and fair prices, consumer satisfaction, social justice, survival and growth of business. We highlighted पहले से तो मैंने क्या ही highlight करूँ. That is why we, as an informed consumer, have to wake up and save ourselves from various types of exploitation, circumventing project, and conflicts in wide so scope. It's not only includes educating consumers about the rights and responsibilities, but also helping getting their grievances redressed. It not only requires judicial machinery for protecting the interests of consumer, but also requires the consumer to be united and form themselves into consumer associations for protection and promotion of their interests. I think this is a good way to I'll highlight with pink, and this is the blue highlight. And this is the statement, this is the explanation. This explanation is good to, if you remember it, you can just shove it down in the paper. From consumer's point of view. Okay, now we come to the actual importance. The importance बता के इसने इतना सारा फालतू को बता दिया. Now it's the importance from consumer's point of view. The importance of consumer protection from the consumer's point of view can be understood in the following points. Consumer ignorance. Consumer is ignorant, I think, but so it's not the market consumers, right? Um, of course, this is important. In the light of widespread ignorance of consumer about the rights and reliefs available to them, it becomes necessary to educate themselves about the same so as to aware consumer awareness, uh, achieve consumer awareness. Yeah, I said the same thing. See, if you understand a bit of English, you need not you know, get the points which are written. These are more like chat GPT answers. ठीक है मैं अभी खोल के दिखाऊंगा. If I just go to wait. I don't know, मैंने ये तो नहीं सोचा था मैं करूँगा.
But still, I just want to tell that this is nothing important. Like, ये तो chat GPT भी कर लेगा. Do something which is which actually makes sense. So give the caps lock on. Um, give one line. What I mean? देखो अभी बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन देगा. तुमने को इग्नोरेंस बिकॉज यू लैक नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ जो बात है which may lead to uninformed purchase and decision. तुम ये बोल दो. So these are simple English sentences which anyone can make. So it's not such a big deal, at least according to me. Okay. So I will shut this down. And yeah, now we will get back to the chat. So we don't need to learn this stuff. Unorganized consumer. Okay. Uh, Unorganized consumer. Consumer needs to be organized. In the form of consumer organization which will take care of the interest. Two. In India, we do have consumer organizations which are working in this direction, and the production is required to be given to consumers. Till they, these organizations become powerful enough to protect and promote the interests of consumers. Okay. So basically, consumers are unorganized and like consumer need to be organized in the form of consumer organization which will take care of their interest. चलो ठीक है थोड़ा सा explanation तो बनता है. Okay. ये अच्छा है if you want to I think in business is where that you can do these creative things again. When you do such creative things, like जो चेकर होता है उसे दर्द होगा. अगर आप वो आपका मार्क्स काट रहा होगा उसे दर्द होगा दुख होगा मार्क्स काटने में. एंड वो सोचेगा छोड़ो यार इतनी इसमें मेहनत करे अच्छे में ड्राइंग बनाएंगे यार. Of course, your drawing needs not be the best. But what actually matters is your effort should be being present there. That you have put effort into it. Okay, so this is next. Widespread exploitation of consumers. ठीक है भाई पूरा फैला हुआ है consumers का exploitation. Consumer might be exploited by unscrupulous. Unscrupulous से इतना ज्यादा वर्ड आ गया है. फिर क्या बोलूं इसका. चलो देख ही दिख भी रहा है. दिख तो रहा है. Having or showing no moral principles, not honest or fair. Yeah, that's it's the same thing that I said. Unscrupulous. Unscrupulous. It's exploitative and unfair trade practices like defective, unsafe products, evaluation, fraudulent misleading advertising, food and black market, etc. Consumer needs to be protected against such market practices of the sellers. So these are the unfair trade practices to which consumer is exploited. Okay. From the point of view of the business, now we will see from the point of view of the business. और ये और को मैं रंग बिरंगा बना दूंगा. A business must also lay emphasis on protecting. Okay, I said if for just 1 minute, I should see if this stream is going okay. It looks like it's okay. Yeah. A business must also lay emphasis on protecting the consumers and adequately satisfying. कितना टाइम. 14 minutes. Uh,
It is important because of the following reasons. Long-term interest of business. Okay, so long-term business can invest in AI कि वो consumer को बिल्कुल फायदा दें. Right? ये सब लिखा होगा. Enlightened business realize, enlightened business bro, realize that it is in the long-term interest to satisfy the consumers. Satisfy consumers not only lead to repeat sales but also provide good feedback to the prospective consumers. Uh, it is called something word of mouth. Yeah, and thus help in increasing the consumer base of the business. Thus, business firms should aim at long-term profit maximization to consumer satisfaction. This is so good line that I cannot stop myself from highlighting. Business uses society. This is like a social responsibility part of the thing. Business organizations use resources that belong to the society, but they have a responsibility, right? Responsibility to supply such products and render such services which are in public interest and would not impair the public confidence in them. इसमें वैसे हाईलाइट करने वाला कुछ है नहीं. सेम चीज तेरे को यही तो बात है. बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज. Business organizations use resources that belong to the society. See, this is a part of what I want to you to understand, what I want to teach you. When I said I know how to expand a line, this is what I said. See, she, they both said the same line twice, but nobody, like almost nobody, could understand it. It's a business uses society's resources. Now business को नहीं करती है, business organization use resources. अब वो उल्टा करते हैं. Right? उल्टा करते हैं, resources will belong to the society. Okay? So this is how you tweak a sentence and make a new sentence out of a single sentence without adding anything into it, but adding many words into it. Right? So this is something that you need to learn, at least in the business studies bit. And I use this a lot. My lines look like four lines. Like four line I fill my pointer in, but I have almost repeated the same thing that I said in the heading of the topic. This is an important skill to have, if you understand. Okay. Social responsibility. I think this is the same point here, actually. Like यहाँ पे भी उसने responsibility की बात करी थी, but of course this is NCERT तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा. इनने भी जबरदस्ती पॉइंट बनाया है चारों में. A business's social responsibilities toward various. So business organization money by selling and protecting services to consumers. As consumers form an important group among the many stakeholders of business, and like other stakeholders, their interests should be well taken care of. This is actually a good thing. Good example. That consumers form an important group. Important. Okay. So consumers are stakeholders of business, and like other stakeholders, their interests should be well taken care of. Moral justification. I actually think like most of these uh, points are the same. Moral justification, social responsibility, and business user society resources. ये सबको एक ही पॉइंट में मिला सर. It is a moral duty of any business to take care. And what you should understand by this is that आपको भी सारे पॉइंट्स पता होने जरूरी है. If you know one point or 2 point, उसके भी 2 point के भी चार बना सकते हो. बस थोड़ा सा अंदर की बात पता होना चाहिए. उसके ही चार पॉइंट बना दोगे एंड उसमें सेम चीज लिखोगे बट अलग अलग तरीके से लिखोगे. दिस इज अ स्किल ब्रो. दिस इज अ स्किल. एंड बिजनेस स्टडीज पेपर में इट इज इम्पोर्टेंट. इट इज अ moral duty of any business. Again, to take care of consumer interest. And ये सेम चीज ये अब इसने अपनी moral duty कह दिया. वहाँ पे उसने कह दिया था कि
consumers from stakeholder and like others, their interest has to be well taken care of. यहाँ पे क्या है? Business to take care of consumers interest. These are some intricacies of the NCRT book. And इधर क्या लिखा है कि they have a responsibility to supply such products and services which are in public interest. हाँ, आप ये क्या कहते हैं public interest, पहले तो consumer interest. थोड़ा सा डिफरेंस है बट कोई बहुत ज्यादा नहीं. This is and देखो the same चीज. Unfair trade practices like defective unsafe products, adulteration, false marketing, etc. सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी है, सेम चीज कोई देखा. Unfair trade practices like defective. बाप रे, कॉपी पेस्ट ही मारती है यार, कॉपी पेस्ट ही मारती है. Okay, so this is unscrupulous. Thus a business must avoid unscrupulous and ये तो पूरी ही लाइन कॉपी मारती है. Consumer might be exploited. देखो consumer might be exploited by unscrupulous and unfair practices. तो यहाँ पे क्या लेता है? Thus a business must avoid the unscrupulous exploitation and unfair practices. It's funny. It's funny actually. हाँ. So if you read the book, you know कि पूरी बुक में एक ही चीज अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं. सॉरी, एक चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ, सेम चीज अलग अलग तरीके से लिखी हुई है. सो अगर आप उसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो चीज एक बार घुस गई ना, फिर आप उसे खुद भी अलग अलग तरीके से लिख पाओ. हाँ, तो ये एट लास्ट एक नया पॉइंट आया है मुझे कवर में. A business engaging in any form of exploitative trade practice would invite government intervention or action. This can in turn harm the image of the company, which is true. Thus, it is advisable that business organization voluntarily resort to such practices where the consumers' interests are well taken care of. ठीक है, आई डोंट टेल एनी पॉइंट, इसमें तो खुद भी बना के लग सकते हैं. वो बेसिकली देखो किसी भी बिजनेस को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करे. पहले तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस का रनिंग में दिक्कत हो रही होती है. एंड सेकंड थिंग आती है कि पब्लिक इमेज बहुत बुरी हो जाती है. पब्लिक इमेज बुरी होती है बंदे की, और पता नहीं क्यों होती है भाई, ऐसे होना नहीं चाहिए बट हो जाती है. सो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए. अभी देखो एसबीआई की इमेज बहुत बुरी हो रही है. इफ यू सी ड्यू टू द इलेक्ट्रोल एग्जाम्पल्स. चलो तो मैंने पानी पी ली. कंज्यूमर प्रोडक्शन है 2019. The consumer protection of 2019 seeks to protect and promote the consumer interest through speeding and inexpensive reversal of the grievances. It extends to the whole of India. It is applicable to all types of business, where a manufacturer or a trader and various supplying goods or providing a service, including e-commerce firms, where acting for certain rights to consumers with a view to empowering them and to protect their interests. बहुत रंग दिया यार मैंने टॉपिक को, बुक को. कोई बात नहीं. Who is a company? A consumer is generally understood as a person who uses a good or avails any services under the company's website. Any good and avail services for a consideration which uh, those users have साथ ही क्या है. अच्छा, here I want to teach on another thing. देखो, यहाँ
पेन ने क्या कहा, कंज्यूमर पर्सन बाय ब्ला 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 ब्ला, एंड यहाँ पे इसने सेम चीज वो पूरा एग्जांपल देके, चार पांच एग्जांपल देके पूरा पैराग्राफ, इतना मतलब पूरा कंज्यूमर का आंसर ये है बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा ये ऊपर वाला लिखा, इसके ऊपर कुछ नहीं है। बट वो क्या करेंगे, नहीं ये एग्जांपल 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 ठीक है, तो वो लिख सकते हैं, अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिस इज ऑल्सो, अगर आपको बिल्कुल ही भरना है पेज और आपका एग्जांपल बहुत छोटा है, आपका पॉइंट बहुत छोटा है, एग्जांपल देना शुरू कर दो, उसको भर के एग्जांपल दे दो। ठीक है, दिस इज, इफ यू अंडरस्टैंड, दिस इज दिस इज वेरी फनी एक्चुअली, यू कैन आल्सो मेक दिस। यहाँ पे आपको इतने अच्छे आदमी बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे ऐसे क्योंकि स्टिक फिगर होता है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ख्याल से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जिंदगी हो चुकी है। यहाँ पे आप ऐसा कंज्यूमर बना सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा वो बना सकते हो, यहाँ पे आपने टेबल बना दी, इसको यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, मतलब अब यहाँ ड्रॉ तो यहाँ पे करनी है ना लैपटॉप पे, तो यहाँ पे लिख देना कस्टमर, और यहाँ पे लिख देना शॉपकीपर, और ये तो बना ही लोगे। और ठीक है, बंद करो, वेट करो, इरेजर कहाँ मिलेगी, अरे यार मैं क्या करने लगा। हाउ डू आई गेट बैक ब्रो, बस थोड़ा सा करना है। चलो मतलब अल्लाह था। कंज्यूमर Consumer Protection Act 2019 provides for six rights of the consumer. So, what is six rights into? Right to safety, right to be informed, um, right to be assured. ये कौन सा right है? ये तो मैं खुद पहली बार पढ़ा हूँ. Right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. These are the six rights. Now let's read it in detail. The consumer have a right to have complete information about the products he intends to buy. Um, including ingredients, date, manufacturer, price, quantity, correction to use. अरे यार तू बंद कर सकते हैं. हमने गलत चीज सॉल्व कर दी. चलो एक घंटे में टाइम जाएगा ये हम चला. चलो छोड़ो यार ये लो टाइम पर कोई बात नहीं.
Because the consumer have the right to have complete information about the product he intends to buy, including the ingredients, date of manufacture, price, quantity, direction for use, etc. The right to be assured the consumer has the freedom of access a variety of products at competitive prices. This implies that the market is to offer a wide variety of products in terms of quality, brand, price, etc., etc., and allows the consumer to make choices among these. Choice is a very important value. I think this right should be said right to choose, the right to be heard. The consumer has the right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction with a goods and service. It is because of the reason that many enlightened business firms have to have set up their own consumer service. Many consumer organizations also work towards this direction in helping consumers in reversal of their grievances. Right to seek redressal. The consumer has the right to get relief against unfair trade practices, restrictive trade practices, or unscrupulous exploitation in the case of the product or the service fall short of its expectations. The Consumer Protection Act, COPRA 2019, provides for redressal to the consumers, including replacement of the product, removal of defect in the product, compensation paid for any loss or injury suffered by the consumer, etc. Right to consumer education, the consumer has the right to knowledge and to well-informed consumers who ठीक है समझ रहा नहीं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हाँ ठीक है बार बार यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आ रहा है तो आप भी अपने सारे सारे के सारे पॉइंट्स में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बिकॉज किसी को नहीं पता कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करा है बल्कि निकलते तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ ही कर दिया है इसीलिए सब कुछ ही हो रहा है The consumer protection and empowers the consumers fight against unscrupulous unscrupulous तो इतनी बार वर्ड आए हैं यहाँ पे exploitative and unfair restrictive trade practices adopted by sellers consumer products by themselves. Hmm. Consumer rights by themselves can also be effective in achieving the objective of consumer protection. Consumer protection is only achieved when the consumers also understand their responsibilities. The consumers should keep in mind the following responsibilities while purchasing or using any commodity or service. ठीक है भाई कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आई है to be aware about the goods and services available in the market together aware of I think इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए था so that an intelligent voice choice can be made तो यहाँ पे मेन है to be aware ठीक है buy only standardized products they provide quality assurance ठीक है ISI मार्क होना चाहिए इलेक्ट्रिकल गुड्स पे FPO मार्क होना चाहिए फूड प्रोडक्शन पे फूड प्रोटेक्शन अथॉरिटी हुआ हॉलमार्क ज्वेलरी पे होना चाहिए ठीक है
Hmm. Learn about the risk associated with products and services. ठीक है भाई, रिस्क associated पढ़ना पड़ेगा. Follow manufacturer's instruction. Manufacturer के instruction follow करने पड़ेंगे. And use the product safely. Products को safely use करना पड़ेगा. Read labels carefully. Labels को carefully पढ़ो भैया. है ना, ठीक है. प्राइसेस रेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट तो लिखा रहता है. एक्सपायरी डेट थोड़ा सा नहीं आता है. एज टू योरसेल्फ टू इंश्योर दैट you get a fair deal. Assert, assert to ensure a fair deal. Be honest in your dealings. Choose only from legal goods and services and discourage क्या आ जाता है कि भाई discourage करो ब्लैक मार्केटिंग हो जाए. आस्क फॉर कैश मेमो वीडियो जरूर लो. ठीक है. This would serve as a proof of purchase. File a complaint in an appropriate consumer forum in case of a shortcoming in the quality of purchase services. सर वैसे तो मेरे को पेन करना चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा नहीं. अरे यार ये तो बहुत सारे हैं. दोनों पेन के नहीं है. पेन बहुत सारा हो गया. चलो हो गया. फॉर्म करने को सोसाइटीज क्लेम आफ्टर पार्ट. रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट. ठीक है भाई, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करो. बस ग्रीन बना दिए. नो योर राइट, राइट टू कंज्यूमर, right to safety, right to be informed, right to her, right to serve, right to support yourself, right to consumer education. जागो ग्राहक जागो. ये जागो ग्राहक. ग्राहक जागो यार, कब जागो. हम्म, जागो, जागो. कहाँ से ऐसे कलर करने को आता है ना. वो बिजनेस स्टडीज को पेपर कितना आसान हो जाता है. सेफ्टी है, इन्फॉर्म्ड है, हर्ड है, रिवर्सल है, कंज्यूमर एजुकेशन है. देखो राइट टू मतलब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. चारों ग्राहक चारों लिख देंगे सीधी बात. ठीक है. यूएस एंड मेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये आएगा सिलेबस में है. देखेंगे थोड़ा सा डिस्कस द स्कोप हो गया. अंडरस्टैंड द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू. ठीक है हो गया. एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट्स हो गया. अंडरस्टैंड. हाँ तो ये सिलेबस में काम है. ठीक है तो ये छोड़ो. वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है. सेल्फ रेगुलेशन में बिजनेस एसोसिएशन में इसमें आ जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया. फिक्की. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. ये सब थोड़ा सा पॉइंट्स में बना सकते हैं. एमसीक्यूज वगैरह वैसे तो नहीं आता है. ये लोग फैक्चुअल थोड़ा कम बना देता है. थोड़ा हवा हवा ही पेपर चलता है. have locked down their code of conduct, which the code of conduct है कंज्यूमर अवेयरनेस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है. गवर्नमेंट है. आईएसआई का इलेक्ट्रिकल पे, फूड प्रोसेस ऑर्डर का फूड पे है ऑफकोर्स. एगमार्क का इसमें एग्रीकल्चर पे होगा. इको मार्क का ऐसे ही होगा. हॉलमार्क का उस पे है, ज्वेलरी पे है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए.
3 tier मशीनरी है ऑफकोर्स। ये भी 3 tier मशीनरी के बारे में डिटेल में आया था कल से अभी है ना। हाँ ये तो अब आ गया यूनिवर्सल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोडक्शन। ये देखो कितनी अच्छी बात है बुक की जो राइटिंग स्टाइल है वो यहाँ पे एंड करते हैं और उसी से कनेक्ट करके शुरू करते हैं। दिस इज ब्यूटी फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर guidance. The consumer protection act 2019 provides for setting up three-tier enforcement machinery at the district state level. District Consumer Disputes Redressal Commission, State Consumer Disputes Redressal Commission, and the National Consumer Disputes Redressal Commission. They are briefly referred as ठीक है यार इतना बड़ा वैसे भी नहीं कोई समझा briefly referred as District Commission, State Commission, and National Commission. ठीक है respectively while the National Commission is set to set up by the central government, the State Commission and the District Forums are set up by the state government. क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है ये सब है ना। The federal regulatory agencies have the archive structure of 3 tier machinery. होगा कहीं पे यार कहाँ पे है उनका फिगर ही नहीं दिया लो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ठीक है सारी कमीशन के बारे में करना पड़ेगा कितना बड़ा होगा ठीक है 42 मिनट तो ऐसे निकलेगा। सॉरी यार मैंने वो हटाया कितना चैप्टर बाकी है अभी इससे ज्यादा नहीं बचा एक ये है फिर रूल ऑफ एनजीओ है खत्म चैप्टर खत्म खत्म ठीक है तो 1 घंटे के अंदर अपन चैप्टर निपटाएंगे। ये 12 12 पेज का चैप्टर है कुछ कुछ 24 पेज के भी चैप्टर है दोनों 2 घंटे लगते हैं। दिस इज हाउ इट विल गो नथिंग सो केयर्ड अबाउट इट बट 12 चैप्टर है ना तो 12 घंटे और मान लो 6 चैप्टर में लग गए तो 18 घंटे 18 घंटे के हिसाब से 6 घंटे रोज करना पड़ेगा विच इज obscure 6 घंटे रोज कर this commission has a jurisdiction to entertain complaints where the local services paid consideration does not exceed 1 crore rupees. समझ रहे भैया does not exceed 1 crore rupees. Value protection services paid as consideration does not exceed 1 crore rupees. इतना मैं सही सतरंगा बना रहा हूँ either on the first hearing or any later stage, regards to the provision that the various elements of settlement which may be acceptable to the parties, direct them to give their consent for settlement of dispute through mediation, in which 5 days, in case the parties agree for settlement by mediation, with written consent, the district commission refers to the matter for mediation, and the provisions relating to the mediation shall apply. However, in the event of failure of settlement by mediation process with the complaint, if the complaint alleges defect in goods and services which cannot be determined without proper analysis to test of goods, the commission obtains a sample of goods, seal it, and refer to the appropriate authority for analysis. In case of service use, dispute is settled based on the basis of evidence brought to its notice by the complainant or can ask for any required information, document, or reports on the service provider for settlement. If any of the parties are not satisfied by the order, the district commission can appeal against such order to the district commission on the grounds of facts or laws within a period of 45 days from the date of order. मैं बस पढ़ते चला गया ध्यान नहीं दिया कुछ यहाँ पे कुछ मीडिएशन की बात चल रही थी ना
Um, यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात चल रही थी। हम्म, ये है इम्पोर्टेंट। within a period of 45 days from the date of order. State Commission. The several require the respective state government or any functions at the state capital. The State Commission under the state jurisdiction in the jurisdiction when putting complaints for value of coaching services paid as considered exceeds 1 crore but does not exceed 10 crore. देखो यहाँ पे 1 करोड़ से नीचे, यहाँ पे 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में again, if any of the parties is not satisfied, it can appeal to the matter within a period of 30 days. पहले 45 days था 30 days. ठीक है भाई, ठीक है, हम पर मुझे करना है. National Commission. The National Commission has territorial jurisdiction over the whole country. National Commission has jurisdiction to entertain complaints for level of services. It has consideration at system. Appeal. अच्छा, नेशनल कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप देश छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज भैया उसके ऊपर था क्वेश्चन एक्शन। तो सीजीआई डीवाई सब्सिट्यूट के ऊपर तो कोई रिलीफ अवेलेबल कोई काम का नहीं है, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट ऑन द सिलेबस। इफ यू सी, हाँ वैसे रेमेडीज अवेलेबल है, तो रेमेडीज अवेलेबल लिखा तो है। चलो फिर पढ़ेंगे, लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं। District or state commission, state or national commission is satisfied about the defect of product sort of the services on practices or claims for a compensation under the product's liability is in order. To remove the defecting goods, to replace the defective product with a new one, free from any defect, to defend the type of paid for the product or charges paid for the service, to pay a reasonable amount as compensation for any loss. To pay punitive damages in appropriate circumstances, to discontinue the unkept restricted trade practices and not repeat in future, not to offer hazardous, not to है वो मतलब कॉमन सेंस है कि नॉट टू होगा, to withdraw the hazardous, हाँ ठीक है सेम है, to cease manufacture of hazardous, तो वो hazardous goods के नाम पे 4 पॉइंट बना दिए उसने, 3 है ना। तो देखो, और यहाँ पे रिमूव द डिफेक्टिंग गुड्स, पहले हजार्डस, पहले गुड्स था, अब हजार्डस गुड्स था, ये ऐसे खेलते हैं ये लोग। तो वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट के भी इनने एक तो बना दिए, है ना। तो या तो रिमूव करो, या तो रिप्लेस करो, या तो रिफंड करो। रिमूव रिप्लेस रिफंड, हाँ जी, रिमूव रिप्लेस रिफंड। ये तो कॉमन सेंस है थोड़ा सा, कि रिमूव करवाओगे, रिप्लेस करवाओगे, रिफंड करवाओगे, कंपनसेशन दिलवाओगे, क्यूमुलेटिव डैमेज के लिए और कंपनसेशन दिलवाओगे,
डिसकंटिन्यू करवाओगे, हजार्डस प्रोडक्ट ऑफर करने को बंद करोगे, कंपनसेट, हाँ वही कंपनसेट यार, ठीक है. However, every order of a district commission, the state commission or the national commission is deemed to be final if no appeal for such order is made by any of the parties involved in dispute. ठीक है, this is called role of consumer organizations and NGOs. This is the last topic. And yes, other organizations and non-government organization, this is the full form of NGOs, which should be known by every person. Does not matter if he reads business studies or not. For the protection and management of consumer interests, non-government organization or non-profit organization, which aim at promoting the welfare of people. So non-government organization, non-profit भी होती है. Okay. They have a constitution of their own, are free from government interference, free from government interference, free from government interference. Together, consumer organizations and NGOs perform several functions to promote the interest of consumers. Educating the general public. Uh, अरे यार ये तो बहुत सारा है, क्या करें. एजुकेट करेंगे अबाउट कंज्यूमर राइट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देंगे, सेमिनार करेंगे, वर्कशॉप भी करेंगे, periodicals भी पब्लिश करेंगे, पब्लिकेशन भी बनाएंगे, नॉलेज देंगे भाई कंज्यूमर को प्रॉब्लम के बारे में, लीगल रिपोर्टिंग करेंगे, है ना. कंपेरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स at regulated laboratories to test related qualities, competing brands and publishing the test results for the benefits of consumers. कंपेरेटिव टेस्टिंग करेंगे, encouraging consumers strongly protest against, एनकरेज करेंगे कंज्यूमर को भाई, एनकरेज करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, एनकरेज करो कंज्यूमर को करना. लीगल असिस्टेंस देंगे, ये तो बहुत जरूरी होता है. फाइलिंग कंप्लेंट उनके बिहाफ में कंज्यूमर कोर्ट्स में. कुछ कंज्यूमर को ज्यादा पता नहीं रहता है ना. कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कट्स 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 है भाई, जो कट्स. taking an initiative in filing cases in the courts in the interest of general public. हाँ ये सेम चीज, ठीक है. तो एनजीओ बहुत सारा काम करते हैं, देख लो क्या क्या करते हैं, ठीक है. If you need comment down ये पीडीएफ, हाईलाइटेड पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है. So this is all about it. This is the summary. This is the exercise. Under which consumer right is a business firm set up a grievance. किसमें होता है, right to be heard में होता है. Which quality certification mark is used for agricultural products? Egg mark. What is the jurisdiction of cases that can be filed in the state commission? 1 crore से ज़्यादा, 10 crore से कम. State I need to release a bill to consumer under consumer protection. I don't know. अच्छा हाँ, रिलीफ क्या क्या होती है, रिफंड, कंपनसेशन, punitive damages, है ना, रिपील द प्रोडक्ट, रिप्लेस द प्रोडक्ट, वगैरह वगैरह, है ना. तो बताने थे हमने, तो बहुत सारे बता दी. Name the component of product mix what that helps the consumer to exercise the right to. देखो यार ये तो प्रोडक्ट मिक्स मार्केटिंग चैप्टर की बात है, अब वो नहीं तो पढ़ेंगे, है ना. लेकिन यहाँ पे आई थिंक होगा आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड होगा, है ना. जब वो कंज्यूमर की बात समझते हैं ना, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में. अच्छा नहीं 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 नहीं, हाँ प्रोडक्ट मिक्स में ये लेबलिंग होगा. हाँ लेबलिंग होगा, लेबलिंग से सब पता चल जाता है कंज्यूमर को, लेबलिंग ग्रेडिंग वगैरह से कि कहाँ क्या रहा, मतलब वो पूरे इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द कंपनी, एंड मतलब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. दिस इज द गुड क्वेश्चन. 2 चैप्टर तो मिक्स कर दिया.
Enumerate the various acts passed by the government of India which help in the protection of consumer interest. क्या बोलते हैं? हाँ, वेरियस एक्ट्स। अच्छा, ये तो पुराना है। इसको ये पहले बहुत सारे एक्ट थे, अब पूरा एक ही है कंज्यूमर एक्ट। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर? ठीक है, वो तो वहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, चलो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये हु कैन फाइल कंप्लेंट इन कंज्यूमर कोर्ट? कस्टमर कर सकता है, और कस्टमर के बिहाफ में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर? सोचना पड़ेगा। देखो, पहले तो पैकेज पे जो लिखा है वो सब पढ़ो। ओके, रीड इंफॉर्मेशन ऑन पैकेज, कैश मेमो लो। ठीक है, अगर कुछ अनस्क्रूपलस लगता है तो उसके लिए अपना क्या कहते हैं, कंप्लेंट करो। ठीक है, फेयर डील लेने की कोशिश करो। ठीक है, और क्या करेगा कंज्यूमर? कैश मेमो तो ले लिया कंज्यूमर ने। हम बाकी कंज्यूमर को एजुकेट कर दो, अपने आप को खुद को एजुकेट कर लो। ठीक है, राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। और हाँ, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह प्रमोट मत करो। बस इतना बहुत है भाई, 10 नंबर तक हो गया है क्वेश्चन। वो इस कंज्यूमर एज पर सीपीए, जो कि बुक्स को बाय करता है। चलिए इसको वापस से देख लेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ये वैसे मैं सोचा नहीं था कि मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगा। फर्स्ट साइड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया has made a proposal for hotels and food outlets to declare the kind of oil fats using kind of blah 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 in the consumer right. Consumer right, of course, right to information. बाप रे, कितने क्वेश्चन है। Explain the importance of consumer protection from the point of view of a business. देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचाओ, है ना? और कंज्यूमर अपना, कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, कंज्यूमर भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये सारे गुड्स खरीद रहा है। उसके राइट्स तो सुनना चाहिए आपको। और क्या है, देखो, सोसाइटी से ही हम सब, मतलब बिजनेस खुद बना ही सोसाइटी पे है, तो सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए। बस इतना ठीक है। एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। देखो, पूरा ही बड़ा क्वेश्चन है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बताएं कि राइट क्या है? राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल, right to be informed, right to information, right to be informed, uh, right to consumer education। कैसे बता दिया? right to be addressal, right to be heard, right to be informed, right to information, information नहीं, और right to consumer education। चार बता दिए, छह होते हैं। एक तो राइट टू चूज वाला है, उसका नाम कुछ अजीब सा है ना, तो अभी टाइप्स भी फिर से देखते हैं। एक राइट देखना है, एक कंज्यूमर की डेफिनेशन देखना है। व्हाट आर वेरियस ways in which the objective of consumer protection can be achieved? ये तो यार पढ़ाई ना, बट सोचते थे। देखो, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, कंज्यूमर अपना काम करेंगे, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करेंगे, एनजीओ अपना काम करेंगे। ठीक है, इन सबके काम काम गिना देना कि क्या क्या कर सकते हैं वो लोग। तो वो इतना कॉमन सेंस तुम लगा लोगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने में बैठूंगा। ठीक है, बस 4 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन उठते नहीं है, लेकिन मैं कभी कर ले रहा हूँ ताकि ये ना एक एक्सरसाइज हो जाए, माइंड की एक्सरसाइज होगी। अभी आप वापस से जब
मतलब आपको चैप्टर याद होगा इसलिए। What are the various ways in which the objective of consumer protection? हाँ ठीक है। Explain the reversal mechanism। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पॉइंट रहेगा वो तो पूरा टॉपिक ही। Explain the role of consumer organization। अच्छा बस ये बोल देता हूँ, तीन है। इंडस्ट्रियल कमीशन है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। यहाँ 1 करोड़ के नीचे होता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ होता है, यहाँ 10 करोड़ के ऊपर होता है। यहाँ 45 दिन में अगर मन नहीं करा तो ऊपर चलेगा, बाकी में 30 दिन का है, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। बस इतना ठीक है। हाँ, रूल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का क्या है कि भाई एजुकेट करो उनके, फाइल मतलब कंप्लेंट फाइल करने के लिए प्रमोट करो, या फिर उनके बिहाफ में कंप्लेंट ही फाइल कर लो खुद ही। अलग अलग वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग करवाओ, कंपैरेटिव स्टडी करो। अम, और अगर करो हमको कि एनवायरमेंट को सेफ रखें, तो क्या यार, ये सब तो जनरल नॉलेज है, पता नहीं क्या बिजनेस स्टडीज के नाम पे क्या करूं। ये इतना बड़ा तो मैं पढ़ नहीं था, छोड़ो। बस ठीक है, हो गया तुम्हें, इतना बहुत है आज के लिए। क्या 1 घंटे हो गए? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट